हेलो। हेलो। हाँ भाई, चालू करते हैं, रुको। हेलो। अब वो तो पता है, आवाज आ रही है मेरी। हेलो प्रो। एक सेकेंड। स्लो आवाज है। स्लो मीन्स कैसे? आवाज ब्रेक हो रही है, क्या हो रहा है? भाई ये तो पूरा शो कर रहा है मुझे तो। हाँ, लाइव रिकॉर्ड होगा भाई। ठीक है भाई, हाँ। तो हमारा टारगेट वही है, डेली की तरह। अभी मैं सोने पे हैक कर रहा था। तो अभी तो अभी मैं नया लैपटॉप ले लिया है। तो सो लेट्स, अब हम डे एवरी वीक लाइव स्ट्रीम किया करेंगे। पहले मैं दूसरा लैपटॉप यूज़ करता था, और ये नेटफ्लिक्स चला हुआ है। तो, तो सबसे पहले भाई नोट टेकिंग है। तो नोट टेकिंग के लिए मैं, तो आज हमारे ये टॉपिक रहेंगे।
तो न्यूक्लियस तो बहुत बंदे यूज़ करते ही होगे तुम। तो कमेंट में शो करना कोई कौन इस टूल के बारे में जानता है, सेंट के बारे में। जो सेंट यूज़ करते हो, ये टूल यूज़ करते हो जो, कमेंट करो। अगर नहीं करते हो तो मैं फिर बताता हूँ। अ, ये पता है। और नोट टेकिंग में क्या यूज़ करते हो? ओके। तो अभी मैं सोनी पे फिर से हैक कर रहा हूँ दिस ईयर, और ट्राई करूँगा टॉप 10 में आने का सोनी पे। ठीक है, तो जो मैं टूल कह रहा हूँ, तो ये टूल है। मैंने ये वीपीएस में कॉन्फ़िगर कर रखा है, पहले से ही डाउनलोड है मेरे वीपीएस में। तो ये जो कमांड है सेंट ई, सेंड न्यूक्लियर टेम्पलेट्स के, तो ये क्या करता है कि एक फोल्डर क्रिएट करेगा सेंड न्यूक्लियर टेम्पलेट्स के नाम से, और जितनी भी पब्लिक रेपोजिटरी हैं न्यूक्लियर टेम्पलेट को लेके, वो उन इन सबको क्लोन करेगा ये, जितनी भी पब्लिक टेम्पलेट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर नॉर्मल टेम्पलेट्स है वो तो आएंगी, बट उससे एक्स्ट्रा भी ऐड होके आएंगी। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो यही है कि रेकॉन आफ्टर रेकॉन, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा डाटा डिलीट कर दिया है वैसे तो सोनी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। मैं वीपीएस से कनेक्ट करता हूँ। कोई ट्राई मत करना लॉगिन करने का। और जो ये मैंने जो शॉर्टकट बना रखा है वीपीएस, सीधा कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे मैं वीपीएस डालता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा एसएसएच कमांड रन करता है, जो भी आईपी है, ठीक है। तो इसको जैसे लाइनक्स में बैश एनालिसिस होते हैं, वैसे ही विंडोज़ में डोज की फाइल होती है बैश एनालिसिस की तरह ही। और उसको हम एच की रजिस्ट्री एडिट में कॉन्फ़िगर करते हैं कि ऑटो रन हो ये डोज की। तो मैं दिखा देता हूँ। आई थिंक इन डेस्कटॉप, ये मैक्रोज के नाम से मैंने एक फाइल बनाई है, और इसमें डोज की है। तो जो मेरा लॉन्ग कमांड्स होते हैं जितने भी कमांड कमांड प्रॉम्प्ट में, और मुझे वो रन करने हैं, तो मैं क्या करूँगा कि उनको शॉर्ट फॉर्म में देके एक अलाइस बना के डोज की के नाम से
और जैसे फॉर एग्जांपल डोज की एच एच ई को, तो अभी मैं एच हेलो यू कैन सी इको इज ऑन उसकी इको डॉलर। तो जो मैं डोज की में ये वैल्यू दे रहा हूँ एच इको डॉलर, तो ये देखो कि एच में जो मैंने दिया है, फॉर एग्जांपल एच के बाद मैंने ई को डॉलर दिया, तो मैं सीधा एच डालूंगा तो ये डॉलर को इको कर देगा। फॉर एग्जांपल उसकी ई को हेलो, अभी मैं एच डालूंगा तो ये देखो हेलो। तो जैसे बैच एनालिसिस होते हैं वैसे ही ब्रो जीयूआई का तो यूज़ करना ही नहीं वीपीएस में, मेनली मुझे बैच ही चलाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं वीपीएस से कनेक्ट हो गया। तो ये देखो जो यहाँ पे है सेंड न्यूक्लियर टेम्पलेट्स, ये टूल है, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है सेंड स्टार्टेड। तो ये क्लोन करने लग जाएगा एकदम से सभी टेम्पलेट्स को। तो इंस्टॉलेशन तो वहीं पे आप गिटहब का रेपोजिटरी है वो चेक कर लेना, मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ठीक है। और जो नोट टेकिंग के लिए जो ऐप है वो है एवर नोट, और ये बेस्ट ऐप है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे नोट बना रखा है नोटबुक सोनी, मुझे डोमेन कौन कौन से टेस्ट करने हैं, उनमें से 200 कौन से हैं, उनके ऊपर पोर्ट कौन से हैं। ठीक है। और उन पोर्ट को मैंने जितने भी डोमेन है इनको आईपी में कन्वर्ट किया है, और फिर आईपी को पोर्ट स्कैन किया है। ठीक है, वो मैं अभी एक बैच चालू है मेरा, तो उसके हिसाब से मैं दिखा दूंगा। और ये मैंने एक मुझे एक इंटरेस्टिंग डोमेन लगा dl.sony.com। भाई ये बस सडनली मेरा प्लान हो गया आज, तो कहीं पे अनाउंस नहीं किया मैंने कि मैं लाइव लाइव आ रहा हूँ, क्योंकि मैं सोनी पे हैक ही कर रहा था अभी, और मैंने एक बग रिपोर्ट भी किया है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर का। और तो जो dl.sony.com है वो उनका न्यूरल करके एक प्रोजेक्ट है, और मैंने इस पे टू डू लिस्ट डाल रखा है कि मुझे डायरेक्टरी फोर्स करना है, और ये मेरा भी रहता है। ठीक है। तो जैसे ही जो जो होगा तो तुम एवर नोट जो एप्लीकेशन है वो बहुत मस्त एप्लीकेशन है नोट्स के लिए। तो अभी जैसे मेरा एक टास्क कंप्लीट हो गया है, और बाकी वे बैक यूआरएल ये सब रहते हैं। तो अभी मैं जो मेन टॉपिक था, जैसे अभी मैंने सब डोमेन्स निकाल ली। ठीक है, जैसे मैंने पहले लाइव स्ट्रीम में किया है कि सब डोमेन निकाल लिया, उनको लाइव कर लिया, न्यूक्लाई रन कर दिया, बस हमें कि वो रैकून हो गया हमारा। बेसिकली वो एनुमरेशन है, बट उसके बाद का रैकून, उसके बाद भी कुछ रैकून आता है जो मैं अभी दिखाऊंगा तुमको। फॉर एग्जाम्पल नॉट सोनी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से kraken.com और the domains। तो मैं बस एग्जांपल के लिए kraken ले रहा हूँ अभी, कि सोनी की दो सब डोमेन निकालने में सब फाइंडर बहुत टाइम लगाएगा, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बट ऑल ऑप्शन किया है तो थोड़ा डिले इसमें भी होगा, बट हो जाएगा फिर भी। वैसे तो मैं टूल जो यूज़ करता हूँ वही यूज़ करता हूँ, मेरा सब एनम जो मैंने पहले पिछले लाइव स्ट्रीम में डाल रखा है, बस मैं एग्जांपल के लिए कि अभी वाई बग हंटर यूज वीपीएस ब्रो, बिकॉज इट्स अ फास्ट normal than the PC. CPU cores are very good in that. Internet speed, network bandwidth, everything. And even you just need to access the VPS through cloud. Even using your phone, you don't have to bother about it.
सो फॉर एग्जांपल ये हमारा kraken का डोमेन्स आ गए। तो अभी जो हमारा पीछे पहले प्रोसीजर है कि इसको लाइव में कन्वर्ट करो, और उसको ऊपर जितने भी वो हैं कि सर हमें जानते हो कि नहीं। ना भाई मैं नहीं जानता भाई, मोइन कोकर कौन हो भाई तुम? अरे यार बैटरी गया, रुको मैं चार्जिंग पे लगा दो एक बार। तो अभी हम चालू करते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के लिए ये लैपटॉप है भाई, और डेल एलिनवेयर एक्स X14। तो अभी क्या करता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे डोमेन्स निकाले हैं और इट्स बेसिकली ऑन kraken नॉट ऑन सोनी। तो मैं बस एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। तो मैंने एक बैश स्क्रिप्ट बना रखा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है ना कि हमें डोमेन्स मिल गए, वो मिल गए, तो उसके बाद जो हमारा काम है कि हमें क्या करना है कि होस्ट को आईपी में कन्वर्ट करके, अरे यार, तो हम इसको फाइल लेंगे एक $1 और फिर हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, वाइल आईपी डू आस्किंग। हमें ऑल पोर्ट निकालने हैं। तो मैं मास्क कैन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फास्ट चलता है, वो मैं अभी दिखा दूँगा तुम्हें। रेट चाहिए हमें, और क्या चाहिए, $आईपी, और हमें जो लिस्ट टाइप में आउटपुट चाहिए इसका, और लिस्ट टाइप में आईपी डॉट पोर्ट, ठीक है। तो ये okay bro, I will try in English. So I have created a function. First is function IPS, which what it will do, it will convert all, it will take the all the domains, and I use the host. Let me show how I created this source.
ऐसा से so why am how I created the IPS function to create IP. So let's say using I use host command there, and you can see there is a I want this, and you can see there is a output. Google.com has address, and this is the IP address. Okay, so what I need host. So first I will grab this. I just need that only this line. Now you can see I'm getting only the first line. Now second what I need, I will convert it, reverse it. So you can see the IP come first in opposite direction. Okay, so for example it's 142 but it's show 241. Okay, and I will cut D using space, and I need F1 only. You can see I get the one IP only. Rest thing I do is the reverse it. I get the IP only. So this is the procedure how I created the IPS file, and it will give me all the IP. So let's do this. IPS domain. Now you can see I am getting the IPs of Kraken domains, and mostly it uses Cloudflare and AWS. So I'm getting 104.32 and 454. So these are the IP belongs to AWS and Cloudflare. So I get those IP. So what I will do, you can see I get a output of domains.ip. So what I need to do now, I will run this IP. As you can see, there is repeating some IPs will be repeat. So I will short them and unique them, and then I will do ips.txt. So now I have the unique IPs belongs to Kraken, where Kraken domains are pointed to. हाँ AW के भी यूज कर सकते हो बोलो वो कमांड, बट आई यू प्रेफर कट because I have a best practice on cut, and if it's in JSON then I use JQ. So what I need to do now, I got the IPs, so port scan ips.txt. Now you can see it will start scanning. So let me do something. CMD, yes, yeah. Okay, so CD Sony, yeah. So I will create a because it will start doing the scanning, and it will do port scan, all port scan in from 1 to 65,000 port scan, and you can see how fast is mass scan. If I increase the rate to 1 lakh, then it will do very fastly than this. So depending on the rate field what I am doing, and what rate you mention in the mass scan command, the speed will be affected. But if you use very powerful speed, then it will maybe you don't get the port you want to. So let's until it will goes, I will create uh, okay, team ups is already going on. So first what we will do until these port scan are going on, so let's create a file ports.sh bin sh. What I want, cat star while to do cat star dot ports. uh,
you can see we are getting the port files. So as you can see in this window, I'm not getting the ports result here. Okay, and because they are directly saving in the file. So what I will do, I will create this bash file. It's depend on you if you can wait or you can open directly them, but I want each port detail. Okay, so until I find any interesting IP, I will do nmap on that. So you can, as you know, nmap will take very long time. So what I will do, sleep for 200 seconds and then passports. Now you can see I'm getting the port as well as once it will run, it will sleep for 200 seconds. You can change the time as what you want, and I'm getting the output. But since most of the IPs belongs to Cloudflare, okay, so there is these ports are commonly found on Cloudflare application. So as long as it will goes, we get the more and more result, and after 200 seconds it will start running again. So you can see it scans many IP, but let's focus on what we want. Okay, so for example, I have a IP belongs, let's take a Sony example. For example, this is the IP, and these two ports are open in it. Okay, so what I will do, I don't run nmap full on all ports. I use mask to save my time. Mask will scan all the ports, and once it will done, I will use those port only. For example, it's using 443. Okay, I want its script enable all version. If for example if they're using ftp and whatever, so I will use them, and what I will paste the ip and see what the result. So now instead of scanning all the ports, my time is not, it will not take too long as usual. So what else we need to do? So this is the basic of port scanning after the recon. So that's, so in recon, after recon, the first part is recon, port scan. Second part is wayback URLs. Third part is crawling. For crawling, I'm using Katana by Project Discovery. Fourth part is directory search. Fifth part is uh, JS analysis. And last part is if you are interested, you can prioritize what you want based on your case. So currently my follow up is this. What I will do, I will do port scan webpack URLs, and then once I have done this, what I will do, enumeration. So in enumeration, what I will do, in enumeration, first thing I will do is JS. After JS analysis and point search, and then I will do
ஆமா. இது நான் டைம். So word list. So what I will do, you can see nmap done, testing is done, but I'm using tmux, so I can't. So scrolling will be done by this. So now I can scroll up, and these are the, you can see what they are using, Apache HTTP. So once you are find these external service, Apache 2 point for example, and there currently I found a bug in Sony on FTP port, and I think they have fixed that. And the issue is they are using an FTP port, and what I will do, for example, this is the IP. So what I will do, FTP. Since there is no FTP running, what I will do, anonymous. So they allow anonymous login, and that should not be done here. But on this IP, there is no FTP service running, and I think that IP start with 14, something like that. 14 dot. Uh, yeah, 14.1.23.187. Okay. And what did I will give here, for example, I you can see there is a 8172 port, and I'm still exploiting this. I found this port interesting. You can see this is the vendor application 8172. You can see there is a blank page. Okay, so it will not so what you will need to do here, for example, when I see this port, what I will do, I will Google it, 8172. So basically it is used for IS manager. You can see port but I do, and here is a stack here, it's mentioning everything. It's for using a web application deployment, and I read every write-up that I found interesting on it. Since it giving me this, so what I will done, I found an endpoint .axt, and you can see it will asking me a prompt for user login password. I'm still focusing on more record on this application, so I can do brute forcing or login, whatever. Okay, so I will keep this stream very short, because I will do live stream tomorrow with more example on it. So what we you have learned now, how to create, convert host into IP, and doing port scan, full port scan on all the IP, all the host belongs to kraken.com or whatever your target is. So next thing you have to do is, so I have this URL. So what I will try to do, admin, what is this, anything, you don't just need to spend uh, open all the URL in an browser. So what I will do, okay, first download this. I the http dot server 88. So I have started my server, and what I will do, I will log in. You can see this is the urls.txt. So
all these URLs, I'm getting it. So let's copy all this, and I will create a new notebook here. URLs, and what I will do, I will paste them. It will take a long time because URL list is too long. Okay, so let it be. Maybe I will not, maybe crash or whatever. Keep waiting, but I think that it will crash. So instead of you can see this is a long stuff. So what I will do, so to break down this, I will do this grab admin. Okay, so what I will do, admin URLs short admin URLs. So you can search all these and put as you want, and then you are good to go. You can check one by one which are accessible, what type of, you can see still I'm getting a uh, still getting a duplicate. Just it's just showing me this different ID due to that. But maybe it's interesting once we check this JS file analysis. So I have I have an emergency work right now. So I will continue this stream tomorrow. So good to see you, and keep hunting, guys. That's all. So keep in mind you start using Evernote application for note taking. And if anyone needs anything recorded on Sony, my data, what I have done on Sony, for example, these results, then I'm available to share, except this new 11, but for subs, whatever you want, I can share. Just message me. Okay. Thank you, everyone.